A very good morning and welcome you all to the channel Stock Guru and KS on live streaming of stock market sponsored by Dhan app. तो आज कैसा चल रहा है मार्केट? वेल, काफ़ी मिक्स बैग है और फटाफट जब हम देखते हैं निफ्टी की तरफ तो वी कुड सी कि निफ्टी की ओपनिंग तो जो थी वो 17,400 के आसपास ही हुई थी। काफ़ी फ्लैट ओपनिंग थी। उसके बाद उसने अपने आप को पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ गया हो, बाद में रिकवरी की है उसने नीचे की तरफ से। इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है अपने आप को एक रेंज में लेके चल रही है और उसी रेंज को मेंटेन करते हुए 17,500 से ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ 17,400 से नीचे गिरने को तैयार नहीं, बिकॉज फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे अगर मार्केट अगर गई भी तो उसके बाद उसने अपने आप को आज संभाला है। एंड दिस लाइव स्ट्रीम इज स्पॉन्सर्ड बाय धन ऐप। वापस मैं कह रहा हूँ, आई हैव गिवन द लिंक्स टू ओपन एन अकाउंट विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। So it's very good app and you get a lot of featurings in this tie-up with TradingView. The app is already done, so you get many premium services of TradingView free of cost once you open an account with Dhan app. So right now निफ्टी के केस में हम यही देख रहे हैं कि द बिगर contributors like Reliance, HDFC Group, ITC, they are all on the right side and on the brighter side. Contributors में SBI result अच्छा नहीं था, इसलिए SBI is falling, and so Infi and TCS is also along with it a lot. So banks are little weak compared to Bank Nifty and Nifty, but they have also somehow bounced back from the bottom. तो मार्केट ना उस लिहाज से 180 points it's up in Bank Nifty and 66 points it's up for Nifty. So in the morning there was hardly an opportunity. The only thing which happened I've seen is the bottom के ऊपर buying हो रहा है and people are 180 points creating positions. और एक चीज़ और भी है कि tomorrow is going to be holiday of the market, so that will also be there in the minds of people, and accordingly positioning will happen. World market are usually flat, जैसे कि आपको मैं भी दिखा देता हूँ. You can see US futures flat, you can see China red, Hong Kong red, and Japan is also flat. So and commodity Brent is at 95, but considering all those aspects, market is done well. So major contribution coming from Reliance and HDFC Group, as I told you, HDFC Bank. It is not a smooth one-way rally, right? Please keep that in mind. ऐसी रैली नहीं है कि जिसमें आपको फटाफट पॉइंट्स मिल रहे हैं. बहुत ही धीरे धीरे करके ये जो है अपने आप को मार्केट संभाल रही है. एंड raw patience is needed as Nifty will struggle up once it reaches 17,500 area.
So among the factors, auto is okay. एसबीआई से थोड़ा तो बाकी सारे बैंक भी ठीक हो रहे हैं अब. सीमेंट इज इन ट्रबल. ONGC, BPCL is very much down along with Petronet. तो ये OMCs are down. Finance is again mixed. IT is down. And pharma is also on the weaker side. तो 50% ऊपर और 50% नीचे की तरफ का ट्रेंड है. लेकिन जो टॉप में है उनमें you have HCL, MFL, MGL, sorry, M&M. In the red side, you can see BPCL in Petro. So it's a patient scheme. आप इसमें उस तरह की तेज मूवमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं. तो ट्रेड आइडेंटिफाई करके उसको निकलवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इंडेक्स में. और ये पिछले 3 दिन से हो ही रहा है. जब भी कोई बड़ा लेवल रेंज आ जाता है बीच में तो वहाँ पे आसान नहीं होता है. there is no other way but to show the patience. Like 17500 call can really do wonders. Once Nifty crosses 17500 area. So there is a lot of OI build-up. Let's try and understand through option chain data now. So what is the story in option chain? We'll come to know. Yeah. Okay, so this is the option chain. So 86 lakhs 96,350 is the open interest build-up. I think 17500 call trade can be believed. Okay. And Nifty is maintaining its lead and staying above 17450. Because क्या हो रहा है कि slowly but steadily ऑप्शन चेन डेटा, नहीं ऑप्शन चेन डेटा जो है लाइव डेटा में कई बार प्रॉब्लम्स आता है अनफॉर्चुनेटली. द रियल फिगर्स नीड टू बी रिफ्लेक्टेड constantly, but sometimes
there are issues, and 1 second. क्या हो गया? हेलो. Okay, तो थोड़ा connectivity issue था, I think. That's why it was not moving, I guess. I hope it's sorted out or not. Let's wait and see. Figures are moving. 17,500 CE can be tried at this range of 100 to 104, 105. Because ये जो है वो उस लेवल की तरफ जा रहा है जिसकी हमें वेट है बेसिकली. ओके. एंड this kind of trade stand a chance because क्या है कि index is a composition of high weightage trades moving in one direction, and considering Brent is at below 100 level, so opportunity is very much there. Let's see how it moves from here. And among the top ones, I told you HDFC group और Reliance ने अच्छा काम किया है. Then it's like M&M Access followed by LT, ITC. ITC is really doing very well since last 6 months. So the major issue is with the State Bank, but its weightage is less, so उसका contribution कम है. So we have got 100 greens, 47 red. और chance trade लेने की वजह ये भी है कि whenever you will see that Reliance, HDFC group, they are on the one side, so chances of market falling badly are very minimal. Okay. Because क्या होता है कि इनकी वेटेज इतनी है कि they will not allow it fall badly. And if there is any इस तरफ अगर कोई भी upside आई, so then it will push our market to the higher side only. So that's the mathematics behind that. And if we see Bank Nifty area, it is also showing on a similar lines in the chart. If you see carefully, Bank Nifty, in spite of a poor result by SBI, from a level of around 37,700 actually, it reversed. So buy on dip was the day today. If I can sum it up, more in bank, lesser in case of Nifty, but more in case of Nifty Bank. Okay. निफ्टी बैंक के केस में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है. निफ्टी के केस में रिलेटिवली उतना नहीं, दोनों ने अपने लेवल्स को मेंटेन रखा. थोड़ा स्लो है मार्केट, बट स्टडी है, वो इम्पोर्टेंट है. एंड प्योरली ऑन दैट बेसिस आई फील कि ऐसे इन एरियाज में, इन सिनेरियोज में कंसोलिडेशन बहुत होती है. जैसे अगर बैंक निफ्टी केस को मैंने आपको बोला है कि अगर उधर का ऑप्शन चेन इफ यू ट्राई एंड read and study, let me see if it comes some problems in option chain not coming. There is certain connectivity issues also happening today. तो निफ्टी बैंक के हर्डल्स भी जो हैं, it opened at what 7 1 second, I'm talking about निफ्टी बैंक ना. एक सेकंड. ये कुछ 17,900 37,900 के आसपास बंद हुआ था.
और उसके बाद ये आज जो खुला था वो 37,847, यानी कल से नीचे ही खुला था, बट उसके बाद उसने अपने आप को रिकवर किया है, ज़्यादा गिरा नहीं है. इट फेल डेफिनेटली बट नॉट टू a greater extent, and since then it is time to consolidate itself. Okay. One second, let me check if there is an issue coming in live streaming. Is it? Let me check. Seems like some issues with this site, I guess. Keep price movement is not getting reflected, I think, or it's reflected off and on. Check करना पड़ेगा. Now it's happening. Now it's moving. So थोड़ा maybe the connectivity issue is there or something, because this prices need to reflect constantly, because every time there is a move, the prices do reflect accordingly. Okay. Let me see if I could re-log in. Okay. The 87.87 is the OI buildup at 17,500 call area. Okay. तो थोड़ा सा हिकअप्स हो रहा है आज. आई डोंट नो व्हाई कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, बट ओवरऑल सिनेरियो इज कि बैंक निफ्टी जब तक 17,500 नहीं पार करेगा तब तक उसका अपसाइड आएगा नहीं. 17,500 पार करने के लिए रिलायंस हैज टू स्टे green along with the top HDFC Group and all other shares, and US market has to show some improvement. और हो सकता है, देखो मैंने पहले भी बोला, 1 घंटे में सुबह कुछ खास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं निकली तो पूरा दिन आपको फोकस करके रहना पड़ता है. देयर इज नो अदर वे आउट इन दिस. अगर इफ यू सी the highest volumes are at 17,500 call area, and similarly on the 17,400 area also there is the highest OI buildup called put writers, and the action there is in terms of volume is also at that very area along with the 17,350 also. Okay, so it's a mixed kind of a thing happening with the मार्केट, क्योंकि इतनी आसानी से, जिसको मैंने आपको पहले भी बोला है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएशन हो नहीं रही है. ओके, सी केयरफुली. निफ्टी अपनी एक जगह पे रुक गई है गाड़ी में आकर, और एक और उसी एरिया में वो फंसी हुई है. निफ्टी इन दिस वेरी रेंज. ओके,
तो कंसोलिडेट कर रही है, दैट्स द ओनली थिंग आई कुड से, बिकॉज कोई बहुत ड्रास्टिक फॉल होने की अभी कोई रीजनिंग दिख नहीं रही है. टाइम बिंग यू कैन सी HDFC बैंक इज डूइंग रियली वेल एंड रिलायंस HDFC. तो HDFC ग्रुप and Reliance, these are holding markets pretty well. Or only thing needed is if State Bank of India improves from the fall, then this will help more towards the trade moving up. Okay, so it can check your patience. The market is such that it can check your patience. So once again, I will repeat that you need to open a new account in this Dhan app, and they open your account in less than 24 hours period of time, and the links and all the uh, important descriptions regarding same have been provided down. So do not waste your time. They don't charge you anything for opening an account. So I would recommend it uh, uh, as a broker, and I suggest you to try its services. Okay, so we see there option is there, but क्या है कि थोड़ा थका हुआ है मार्केट, और सुबह की जो अपॉर्चुनिटी उसकी आई थी वो आई थिंक लगभग 9:30 के आसपास जब वो नीचे की तरफ गया था, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी उसने एक बार दे दी है, जिसकी वजह से वो वहाँ दूसरे रेंज में जाकर हमेशा की तरह वहाँ पे अटक रहा है. तो अगर डिप आता है तो मार्केट पूरी तरह से गिरने को तैयार नहीं है, और यहाँ ऊपर की तरफ उसको एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट. It is struggling. As call writers are not ready to move backward, वो उसको फेस करना पड़ रहा है मार्केट को थोड़ी देर से. You can see this. So suddenly Nifty is fallen a bit. You need hell lot of patience on this. Okay, nothing's gonna happen instantly, and I keep on saying money making is not that easy. People who practice hard and understand that levels matter, data is important, they stand a chance to earn. And for that you need a lot of focusing, a lot of you yourself will be able to create trades for your own self. Aspects जो हैं like risk to reward ratio, stop loss management, money management, positionings, ये सब देखना पड़ता है. तो वही हो रहा है, जब भी जरा सी गिरने की कोशिश होती है उसको संभालने के लिए नीचे कुछ ना कुछ प्रबंध है मार्केट का, तो इतनी आसानी से मार्केट गिरेगी नहीं. और लगभग 2 घंटे की मार्केट अभी तक अपने लेवल्स को मैनेज करती हुई आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ समझने में
आपको कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। टॉप वेटेड शेयर्स की मूव्स किस तरफ हैं, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो क्या है, यूएस मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन है वो भी उसी पे ही चलेगा। लेकिन टॉप वेटेज वाले शेयर्स के मूव ही इंडेक्स की मूवमेंट को डिसाइड करेंगे, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, देयर आर मेनी डेज which will be such that you will feel कि nothing is happening, so you can try the trades with smaller stop losses. Okay, क्या है कि if smaller stop loss triggers, you can still manage that loss. Because we are in today's stream observing that it's a very slow paced market. Even though Nifty is holded very well. Why it holded very well? Because top companies have not fallen flat. यही आपको समझना है, इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। जब आपका प्राइस स्टैग्नेंट हो लेकिन गिरे नहीं, या एक लेवल से आके वापस वहां से घूम जाए ऊपर की तरफ, तो आपको एटलीस्ट एक विश्वास आ जाता है मार्केट के ऊपर कि हाँ, ये इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है मार्केट। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट फ्लैट है, तो उसके हिसाब से ही हमारी मार्केट का बिहेवियर भी बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से मार्केट को आप देखना चाहिए आपने कभी भी। अब जैसे यूएस फ्यूचर्स अभी भी फ्लैट हैं, ब्रेंट ऑयल लेकिन हमारे फेवर में है, बट रेस्ट ऑफ द चाइना हो गया, साउथ एशिया जो है वो पूरा सा फ्लैट टू वीक है, बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल रीजन देन एनीथिंग एल्स। ओके, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जियो पोलिटिकल सिनेरियो to affect the market. At the end of the day, the whole world is a business community. प्राइसिंग का इफेक्ट आता है, कमोडिटी प्राइसिंग वो हिलती है तो उसका इफेक्ट मल्टीपल कंपनीज के प्राइसिंग पे आना ही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके शेयर पे भी आता है, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आता है आपके कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल हो गया, स्टील हो गया, और जो कंपनियां इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इम्पैक्ट आता है। दूसरा फिर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हो गया, या रिसेशन की बात हो गई, और डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो हो गया। तो उसमें अगर जरा सी वीकनेस आती है, जब भी आती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके शेयर्स पे पड़ता है। ये मैं आपको ट्रेडिंग के पॉइंट, लॉन्ग रन में आपको यू हैव टू सी a company which is doing well for years, its fundamentals are right, and the business in which it is in is understandable. It's a big conglomerate business, like multiple businesses doing companies are there, Adani Group or Reliance. So they are there with a very strong base and grip on their businesses. उनको आप अपने पोर्टफोलियो के रूप में हमेशा रख के चल सकते हैं, जो एक स्टडी रिटर्न देंगी ही देंगी. Similarly, you have to see the top performing banks if you are a longer term investment kind of a mindset. But if you are a trader, to trader, well,
देखो ट्रेडर के केस में ऐसा होता ही है। हर दिन आपकी लॉटरी लगना है जिसको बोलते हैं पॉसिबल नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है एज ए ट्रेडर बिकॉज यू वांट टू अर्न इंस्टेंटली, वो होगा नहीं बिकॉज definitely few days could be there where you will get an idea or an opportunity instantly, but many days will be there where this will happen. तो इसको कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने फेयर में लाना है, तो वो एक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। वो इट्स नॉट वन डे प्रैक्टिस और समथिंग, है ना। इट्स ए नॉन स्टॉप एक्सरसाइज वेयर यू हैव टू शो योर डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो कितने लंबे लग रहे हैं, उनको रिकवर करने का मेरे पास कोई फार्मूला है या नहीं है। तो ब्लाइंड बेट्स नहीं लगानी है आपको, एंड यू विल कंटिन्यू हैव टू you need to have to monitor the things on range। अगर कंपल्सिव ट्रेडर हो यानी जिसको रोज ट्रेड करने की एक हैबिट है, तो जो कंपल्सिव ट्रेडर होगा तो वो नंबर ऑफ ट्रेड रिड्यूस कर सकता है जब मार्केट ऐसी हो। हर पल ट्रेड करने से आपको पैसा नहीं बनेगा, आपको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी देख के एंटर करना होगा। तो ट्रेडर के लिए तो बहुत ज़्यादा रूल्स, सेल्फ डिसिप्लिन के, तब जाके कहीं पैसा बनता है। आसानी से पैसा नहीं बन सकता, ये मैं आपको बड़ी बड़ी कह रहा हूँ। एंड सेकेंडली आई अगेन would like to share that this team is sponsored by Dhan app, and the Dhan app booking platform, which has a tie-up with Trading View to give you accessible data for analysis part of, in terms of if anybody wants to go deep in the chart. So I keep on saying कि नहीं, my funda is a little different, as I believe that we got to see more of option chain analysis, uh, and then we have to make out our mind ki exactly where are the resistance and support areas for that. Fine. As we see, as we speak rather, 1700 call is showing the promise, and Nifty is heading towards the direction which I want it to go, as market is strongly moving towards that resistance area which I told at 17,500। ओके, उसकी तरफ मार्केट बढ़ रहा है आपका, and I had been on this 17,500 call trade। तो रीज़न इज़ कि एक बहुत बड़ा जब रेजिस्टेंस एरिया की तरफ आप बढ़ते हो और उसकी तरफ जाते हो, तो जो कॉल राइटर है वो दे गेट पैनिक, and precisely that's what happens। You need to see this positioning of open interest in the option chain area, and thereon you will come to know whether he is getting afraid of as the market is moving up, because यहाँ पे it will start unwinding itself। Okay, so that's the game you need to know in terms of how important levels are going to get broke, because क्या है कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे, if you see carefully, these are the areas in 1 minute chart, 3 minutes chart probably, yeah। देखिए ये डीप एरियाज हैं 17490, दैट वाज अराउंड 4th of August, एंड टुडे वी आर ऑन 8th of August। तो ये टूट गया एक बार लेवल, तो उसको फिर एक किस्म से लेवल ब्रेकिंग ही बोलेंगे आप, राइट। तो कोशिश हुई वो उसी तरफ चल रही है मार्केट की कि समहाउ दैट गेट हैपेंस, बिकॉज वंस दैट हैपेंस तो क्या होगा कि बहुत तेजी से वो मूव्स आएंगे, तो आपको अपनी मूव्स
को कैपिटलाइज करके अपनी एडवांटेज में लेना है तो थोड़ा सा आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ता है। तो इस स्ट्रीम में बेसिकली मेरा कहने का मकसद, ये समझाने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई स्ट्रीम देखो तो आप ये समझो कि उसमें अगर सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, तो उसके आगे पीछे का लॉजिक क्या है और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है हमको, ऑब्वियसली थ्रू डेटा। तो जैसे मैंने आपको बात किया था कि देखिए यहाँ 88 लाख से ये 85 लाख आए, तो यू नीड टू केयरफुली वॉच द स्ट्रीम, तब जाके ही you will be regularly able to understand the index market. And once you understand the index market, you start practicing yourself with small quantity, and slowly and steadily you will believe that okay, money earning opportunity can be possible through index trades. Okay, so in this live stream of whatever 1 hour, I try to do one or two times a day. My motto is to make people believe basically कि you can be an earner from index trading. Primarily, Nifty should be ideally viewed as a better index, considering that it is a composition of all the companies, all the sectors. तो उस पर अगर आप ज़्यादा रिलाई करते हैं तो उसकी मूव्स थोड़े से उस पेस पे रहते हैं जो आपके हाथ में कंट्रोलेबल है। उसकी जो पेस है, यानी कि उसका जो इंडेक्स के प्राइस की मूवमेंट है, वो थोड़ी सी मैनेजेबल रहती है। जो बैंक निफ्टी है सपोज, तो उसके मूव्स बहुत वाइल्ड रहते हैं। उसके मूव्स ऐसे रहते हैं कि उसमें आपको स्टॉप लॉस मैनेजमेंट मुश्किल होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम एंड अगेन आई कीप सेइंग। तो यहाँ पे देखिए अनवाइंडिंग हुई 3 लाख की ओवाई की, ओवाई चैन में। और देखिए मैंने क्या बोला, वॉल्यूम्स वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका एक रीजन बनता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस को चुनने की वजह क्या है। और डायरेक्शन ढूंढने के लिए आपके पास फिर मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिनको आपको लगाना है। अब जैसे 17,400 की फुट पे भी तगड़ा वॉल्यूम है। Okay, this is the volume, the 509.6 lakhs. So highest among all the figures is reflected here. And as per as जैसे कि मैंने बोला कि open interest, well, it's like a contract which is not squared off, and for easy understanding on the call side, the highest OI area becomes a resistance, and for the put side, the highest OI becomes the support. Okay, so the put writing and call writing are two concepts in this, in which call writing is simple. Simply, basically, you're telling that okay, I'm writing the call. I want the market to go down from here. Simple fact. Okay, and that's the vice versa for put writing. Okay, so they generally do uh, go on a theory of wanting certain resistance and supports as per their point of view. So when Thursdays are there, then you will definitely understand more this call put writing things, because फंडा यही रहता है कि they want, if I am a call writer at 17,500, I would dearly wish this 111 to go more and more down. Okay, as simple and straight. Then I but writing way you got only a limitation in that you cannot earn beyond a limit. Okay, when you write, the max you can get is 111 points, 112 right now. Fine, ये अगर जीरो होगा तो या जितना नीचे जाएगा इसकी एक लिमिट है, राइट? Wherein when you buy a call, you never know till what, to an infinity you can, it can go up. Okay, so that's the whole thing is all about. And when you write a call or you write a put, जिसको बोलते हैं short करना, that needs lot of funds. The fund requirement will be equal to buying a future. तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, दिस माइन्यूट डिस्कशंस every day in and out through my own sessions also, to hear and all my people who have taken the premium services, they understand very well. Once you grasp all these things, you will start seeing the market in a very different perspective. Again I'm telling, आप जब मार्केट को एज ए स्टॉक देखते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल रिलायंस, ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक जब आप रहोगे तो यू नीड टू हैव different set of things to be seen. You like a wonderful website which is clearly indicating that today is the day to buy say Reliance. Okay, why there are
it is put around 7 technical indicators that include the exponential moving average, VWAP is there, okay, and weighted average price, okay, and then you got super trend. So one side on they have kind of given the interpretation also. So these kind of things give you an idea of, so okay, where the trend is happening. So for us, like Reliance to stay up will be advantageous, as it will surely help Nifty to move up. अब देखिए निफ्टी ने हाई बनाया है 485 का, और माइंड यू 4 तारीख का निफ्टी का हाई था 490। ऑलमोस्ट ये उस रेंज पे की तरफ बढ़ने की भरपूर कोशिश करता हुआ, जो एक अच्छी बात है। एंड सिंस Nifty moves, that means composition of many companies are also moving towards upper side. Then Bank Nifty is specifically related to only 12 bank movements. So वो एक restrained move है। आप देखिए ध्यान से, तो you can understand that Nifty is at 0.456. Sorry, Bank Nifty is 0.4 and Nifty is 0.5. So Nifty has relatively today performed better. I kept telling you this earlier also. Okay. So precisely, reason being, companies like Reliance, companies like HDFC Group, and even there are certain more ITC is performing well. So these are all into the top 10 in the individual high weightage companies featuring, so that uh, which eventually gives the impetus for a push up, they say, right? तो अभी भी हम 12 बजे के आसपास आने वाले हैं। और अब देखिए दूसरी चीज जो है टोल्ड यू कि कीप एन आई ऑन द यूएस फ्यूचर्स। यू कैन क्लियरली सी यूएस फ्यूचर्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, दे लिटिल स्टार्ट टुवर्ड्स द ग्रीन साइड मोर, और उसका इम्पैक्ट भी आएगा आपके मार्केट पे। अगर यूएस फ्यूचर और सुधर गया, तो यू ट्रस्ट मी, वी आर सीइंग टुडे 17,500 एरिया। So this is how you have to do a trading. It's not just as a blind bet you are taking something just from nowhere. So that's not the way you will be able to earn anything. Okay, and I strongly feel that people who are very young and new and they get excited by seeing the market, please get yourself trained, take some crash course, some sort of a training, basic understanding, and give yourself at least 6 months of continuous guidance under somebody। तो 6 महीने के गाइडेंस में आई थिंक यू विल कम आउट। देखो लाइफ में it requires like certain period of training, and if you manage to understand a thing for which you are given certain period, uh, 6 months, 7 months, 5 months, whatever, तो लॉन्ग रन में लाइफ लॉन्ग इट विल हेल्प यू। इफ़ यू बिलीव कि नहीं यार मैं क्यों किसी को पैसे दे के सीखूं, तो फिर भाई आप जितना पैसा उसको ना देख के सीखने में बचाओगे, उससे 100 गुना ज़्यादा आप गवा दोगे। तो इंटेंट क्या रहती है, बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं हूँ, काफ़ी जिन्होंने मार्केट को बहुत नज़दीकी से देखा है, कई सालों से देखा है, तो हमें ये पता है कि किस तरह का एक बिहेवियर और उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। जो आप अगर अपने आप से करने बैठोगे तो उसको आने आने में आपको 5 साल लग जाएंगे। तो अपने आप से आप करिए, तो 5 साल का अगर आप समय दे सकते हैं और लॉसेस के साथ, तो बिल्कुल करिए। लेकिन वही 5 साल लगातार लॉस ना आए, वो लॉस को क्यों ना 1 साल के अंदर ही आप इतने अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएं कि अगर कोई लॉसेस हैं वो आपके रिकवर भी हो जाएं, और आप विद इन आफ्टर 1 ईयर यू स्टैंड ऑन योर ओन। सो यू हैव टू डिसाइड दैट कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आपको कुछ पैसे 3,000, 4,000, 2,000, जो भी अलग अलग तरह के छोटे छोटे मॉड्यूल होते ट्रेनिंग के, आप चाहते हो उसमें मेरी बचत हो जाए, इधर उधर से फ्री में मुझे कोई ट्रेड देता रहे, ऐसे नहीं होता है।
ऐसे होता तो हर कोई यही करता है। बात समझने की कोशिश करें, बहुत से लोग हैं, कहीं अगर इस चैनल को भी देख रहा होगा कोई, तो वो ये इस लालच में अगर कभी देखेगा तो यार भाई मुझे तो यहाँ पे फ्री में ही सब, ऐसे नहीं होता है, कहीं और चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना पड़ता है। और साइकोलॉजी को अगर सुधार करना है तो उसके लिए बिना आप ट्रेनिंग की कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसके अंदर के पॉइंट्स काफ़ी अलग होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते किसी एक स्ट्रीम में कुछ घंटे की टाइम। तो ऊपर नीचे मार्केट का तो बिहेवियर ही ऐसा है कि वो ऊपर नीचे जाएगी ही जाएगी, उसके हिसाब से आपकी सोच, क्योंकि द यंगर यू एनीबडी इज द फास्टर ही गेट्स एक्साइटेड। और यहाँ पे इट्स ऑल गेम ऑफ पेशेंस। So to be young and to be patient itself is a challenge, you see. So this is one of those examples of what I keep saying as a psychological game than anything else. Market trading is not just a number game; it's more of a psychological thing. How fast you can control your emotions and how good you are at concentration. Okay, so these two things are they lack always among the youth, and they intend to get things so fast just like that. तो ऐसा होता नहीं, right? So look, coming back, as we say, we are focusing primarily on Nifty today. So you could see that there is again there was a little upside on the call writings at OI areas. Okay, so which again emphasize that it's not going to be that easy to cross over this. And you could see that a sudden fall has happened now in last 2 minutes. मैं तो 1 मिनट का चार्ट लगा के पल पल जिसको बोलते हैं ना, अगर वो वर्ड सुना हो, पल पल की जानकारी, तो उस हिसाब से ही गिव मी अ सेकंड. So it checks yourself a lot this kind of market, and काफी factors हैं, जैसे I told you geopolitical things are there, otherwise our market is in the month of July really performed well, 7% plus था market, and we started well off इन अगस्त, बट यहाँ पे हम लोग मिडिल एरियाज में हम लोग अब थोड़ा सा फंस रहे हैं. बट had there been no geopolitical tension like what is with getting witnessed between US America and sorry US and China, so maybe the things would have much better. देखिए, हर हफ्ते जो है कुछ डेटा को देखा जाता है, वर्ल्ड मार्केट में इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर बात होती है, और किस तरह से यूरोपियन मार्केट हो गई या कहीं की भी मार्केट हो गई, वहाँ पे डिमांड सप्लाई का क्या चल रहा है, जो मैंने आपको कवर किया था अभी थोड़ी देर पहले. तो उसका इम्पैक्ट आने की वजह से ही ये सब जो मूव्स हैं आप देखते हैं काफ़ी होते हैं. और वॉलेटाइल मार्केट की जानकारी और रखनी है तो आपको मैंने भी बोला है कि जो विक्स है उसको लगा के रखो, इंडिया विक्स. तो इंडिया विक्स आपको एक जानकारी देने के लिए बहुत बढ़िया एक टूल है. इस अराउंड 19.5. तो देखिए 20 से नीचे तक तो कुछ हद तक कंट्रोलेबल माना जाएगा, 20 के ऊपर जब होगा तो काफ़ी वॉलेटिलिटी आएगी, दैट कैन बी ईदर साइड. ओके, तो अभी जैसे कई लोगों का भी मानना है कि ऐसे सिनेरियोज इस महीने में हो सकते हैं जब निफ्टी अपने आप को सस्टेन करने में सारा महीना लगा दे, उसी रेंज में खेलते हुए. अगर इसका लोअर लो अगर समझना है निफ्टी का टाइमिंग, वो तो 17,150 है.
सिंपल आपको मैं बोलता हूँ, 17,150, 17,180, दिस इज द रेंज जिसके नीचे अगर निफ्टी जाना शुरू हो जाता है तो फ्रॉम देयर ऑन द वीकनेस विल बी काउंटेड एज रियल वीकनेस। यहाँ पे क्या है कि वेन एवर इट इज गोइंग डाउन यू यू इंटेंड टू बाई एज बाई ऑन द बाई ऑन द टिप्स काइंड ऑफ मार्केट। ये क्या लिखा है, एच एच एल को? हम ना सर, नहीं समझ में आया, वापस लिखो। ये क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आया। क्षेत्रीय ज्ञान, आप जो मैसेज लिख रहे हो वापस लिखो ठीक से। तो मैं कह रहा था आपको कि व्हेन वी आर सीइंग द मार्केट, आपको खाली नंबर्स को साथ खाली देखना नहीं है, आपको ये देखना है नंबर से क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 87 lakhs का जो वाई बिल्डअप हो रहा है, वो बीच में 85 तक गया था, लेकिन अगेन इट्स रिगेन्ड इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी चल रही है। एंड that is reflecting into this figure. Okay, this once touches around 17,490 plus, so then you will see lot of unwinding happening at call writing part. Okay, क्षेत्र क्षेत्रीय ज्ञान, यार आपने क्या लिखा है, एक तो आपका नाम भी अजीब सा ही है, पर से आप क्या लिख रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोई गेमिंग एरिया नहीं है, कहीं आप कोई गेमर हो क्या यहाँ पर आए हो? So keep an eye on this. Look at the volume side. Well, it's building up 6 to 8.4 lakhs now. So highest volume. तो जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम होगी वहाँ पर ही कुछ एक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, ये बात आप याद रखिए कभी भी। ओके, so you're watching a live commentary of market with the help on this channel, and this is NKS, and the streaming is sponsored by Dhan app. So please, again request you to go to the description box, immediately open करिए अपना अकाउंट और एक नई जर्नी की तरफ ट्रेडिंग की जाना शुरू हो जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग विल टेक हार्डली, केवाईसी विल टेक लेस देन 24 hours for you, and then on your journey will start, right? And believe in the market, Indian market. You will have to believe in India. We as a nation are surely progressing in the right direction, and I'm very confident. When you see the sports arena, there also we are doing exceptionally well as India did in Commonwealth. तो ये सब जब होते हैं छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक मेथड है। ऐसे ही कोई नहीं बोलता कि इंडियन मार्केट आर नॉट गोइंग टू बुलडोज। So please understand. तो वी सी नाउ अगेन, जो एक्शन है वो सारा 17,500 की कॉल के ऊपर ही है। अगर आपका कोई भी एक ट्रेड है जिसके ऊपर आपको कोई कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो वो 17,500 की कॉल पे ही आएगा। लॉजिक सिंपल है कि हम मान के चलते हैं कि द मोमेंट 17,500 रेंज ब्रेक्स, then this trade it's only going to go in one direction, and that is upside. Okay, so friends, it's almost 1 hour now, and I slowly try to give some inputs
वाइल स्ट्रीमिंग एंड धीरे धीरे वो बिल्डअप हुआ। ओके, टेम्पो और अभी भी पीपल सी लाइक वहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस देते हुए 17,500 की तरफ कॉल राइटर्स का ठीक ठाक जमाव है। लेकिन जो बड़ी बात ये भी है कि 17,400 भी अगर आप सी ऑन साइड यहाँ पे भी आपको एक वो आना चाहिए कि देर इज बीन एम्पल long build-up happening at the 17,400 put side area open interest part, so which further uh, ensures that there cannot be a flat fall for the market. Okay, and surely market from here can move more up than falling flat. So I hope आपको मेरी लाइव सेशन पसंद आया होगा। This is not unlike other channels where there is a lot of unwanted discussions happening, no concrete things discussed. So हम जब बात करता हूँ मैं तो I go on certain specifics with my experience, and channel is more dedicated only for index related trading जहाँ पर primarily निफ्टी या बैंक निफ्टी डिस्कस होता है एज एन इंडेक्स। स्टॉक्स की डिस्कशन यहाँ मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। I have a separate group for that where I do give a proper channelization of why you have to buy an X company and what are the parameters that needs to be seen. So all those things, if you want to learn, understand, and become a more independent stock marketeer, so I've given my WhatsApp number is there in my about in the channel itself. So if you go, you'll find it and get in touch with me. I'm sure I will be a help to you primarily from my past experiences and would guide you better so that you don't fall flat if you are very new to the market। फिर क्या होता है अगर शुरुआत में आपके लॉसेस आ जाते हैं तो वो इरिकवरेबल सिनेरियो जो है वो बहुत हर्ट करता है एंड दैट makes you disinterested from this very market. Okay? Well, we are stuck again back and 17,450 to 17,480 is where the market is dwindling इसको बोलते हैं, मतलब उसी रेंज पे चलती हुई ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। ये आप देख सकते हैं 1 मिनट का चार्ट, इसलिए मतलब 11 से 12 के बीच आप क्लियरली देख रहे हैं कि 17,450 का नीचे वाइज और 17,450 की ऊपर साइड। तो इसी रेंज में मार्केट जाती हुई, जैसे कि मैंने कहा, ये काफ़ी थका देने वाला मार्केट है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरफ आपको द ओनली वे एक जिसको बोलते हैं शैकल्स विल ब्रेक, या एक लेवल जब तक वो नहीं टूटते तब तक वो नीडेड पुश नहीं दिखेगा आपको। वो मैं उम्मीद करता हूँ वो आए विद द हेल्प ऑफ यूएस फ्यूचर्स एंड European market. If they give a green signal and they are in green, then we should be doubling our speed of upside. Okay, like right now, Reliance is pushing very well, followed by HDFC Bank and HDFC Broad Access is then LT। ये वही मेंटेन करके रखा है इन्होंने अपने आप को। इस तरफ में बस यही दिक्कत आ रही है कि SBI 2.5% से भी ज़्यादा नीचे है। अदरवाइज उसके बाद तो फिर
कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा गिरी हो, और एक बीपीसीएल ने काफ़ी निराश किया हुआ है, ये भी 3.5% से नीचे है, विच इज़ क्वाइट ए बिग माइनस। दो को अगर छोड़े और बाकी हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 1% भी नीचे नहीं है। तो let's see how this shapes it, market shapes itself. I think that's it for now, and I hope you keep watching this channel by subscribing and pressing the bell icon. You will get lots and lots of inputs from my hand, and as much as possible, I will try to make you confident about trading and aspects of market. So, thanks for being a part of this stream, sponsored by Dhan app. Bye bye, and see you again. Happy trading.